BJP patriarch L.K. Advani has said that elected leaders are accountable to the people who voted them to power and they must strive to uphold their trust in an interview to Anand Bazar Patrika. Citing his own example, Advani said that he had resigned when he was named in the Hawala diaries. The veteran leader put the onus on the politicians, saying that it was his responsibility to uphold trust. Advani's not so subtle hint comes days after he told the Indian Express that the emergency could happen even in the present day. मैंने वो इंटरव्यू देखा है। आडवाणी जी को प्रधानमंत्री ने मार्गदर्शक मंडल का मेंबर बनाया था, जिसमें 3-4 लोग थे, और मैंने उस वक्त कहा था कि मार्गदर्शक नहीं है, मोगदर्शक है। आज वक्त आ गया है ये साबित करने का। आडवाणी जी मार्ग दिखा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं पार्टी को भी, प्रधानमंत्री को भी, कि वो लोग जो जिन पे काले धब्बे लग चुके हैं उनको इस्तीफा दिलाओ, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे वो सुषमा स्वराज हो या कोई भी हो। In case of an interview with the Indian Express, the fact that I said that I do not rule out the possibility of emergency again, because those who imposed that emergency, and which emergency was worse than anything seen under the British rule, which was a foreign rule, they have not shown any regret for it. Therefore, I feel that if those people come to authority again or come to exercise power again, they may again do it. Well, this isn't the BJP veterans' first thinly concealed salvo at the Modi Sarkar. Advani made headlines last week for saying that India could well face an emergency again. While Advani clarified that his remark to the Indian Express was aimed at the Congress, which hasn't apologized for the emergency, the veteran was snubbed at a party event marking 40 years of Indian democracy's darkest days. Now, Advani's latest comment is only the newest in a series of comments by BJP insiders on the Lalit Modi controversy. The remark comes days after former Home Secretary R.K. Singh said that aiding absconders is wrong. Another BJP MP was at the centre of a storm with his own party recently. Darbhanga MP Kirti Azad had hinted that the leaks involving Sushma Swaraj and Lalit Modi were the handiwork of a BJP insider. Look at the ED notice. What does the ED say? ED says Lalit Modi and BCCI. So why only Lalit Modi? Why not the other people who were in the governing council of the IPL and executive committee of the BCCI? A politician, a journalist. Like Sharad Pawar, that would include Farooq Abdullah, Jyotiradittya Sindhia. Yes, all the more. Jaitley. All the more. Is that a reason why this is not being done? No, is that a reason it's not being done? Because there are political leaders on both sides of the front, yes, who are involved. They are Indian nationals first. And you have to go by the law of the land. कोई भी व्यक्ति किसी भगोड़े की मदद करे, ये गलत, चाहे वो सुषमा स्वराज हो या कोई हो। Let's move on now. It's the 9th edition of the Prime Minister's fortnightly radio address to the nation. But this Mann Ki Baat comes at a time when the one-year-old government is staring at its biggest controversy. Prime Minister Modi has so far not broken his silence on the Lalit Modi-Sushma Swaraj link, while the party has decided to back its minister. The Prime Minister did not meet Rajasthan Chief Minister Vasundhara Raje, who was in the capital on Saturday. While the opposition has been gunning for several ousters within the government, Modi has so far avoided making a statement on the controversy. The Prime Minister has previously used Mann Ki Baat radio address as a platform to connect with the people. The topics of his radio address have ranged from land acquisition bill to the Nepal earthquake. However, this time, even the citizens would like to hear about the Lalit Modi controversy straight from the Prime Minister himself. The big question is, will he speak out? जी देखिए, लगातार मोदी जी का जो देख रहे हैं, कभी शिक्षा को लेकर बढ़ावा देने की बात करते हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर, तो हमेशा लगता है मन की बात है। लेकिन खास तौर से देखा जाए, मंत्री जिस तरह से इस समय जो काम कर रहे हैं और जो प्रश्नवाचक चिन्ह उनके कामों पे लग रहा है, तो खास तौर से मोदी जी को अपने मंत्रियों के मन की बात जो है वो जरूर करनी चाहिए, ताकि पूरी तरह से लोगों को भी क्लियर हो जाए कि आखिरकार मोदी जी जो है सही में अपने मन की बात रखते हैं और देश हित के अंदर काम करते हैं।
अभी जैसे वसुंधरा राजे का भी हमने देखा है कि ललित मोदी जी को उन्होंने वीज़ा प्रोवाइड कराया बाहर जाने के लिए, तो फिर मैं एक बार चाहूँगी कि जिन्होंने इतने घोटाले करे हैं IPL में और इन सब में, तो मैं चाहूँगी कि वो एक बार काले धन का इशू उठाएं। ये जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं विपक्ष से या सभी लोगों की तरफ से ललित मोदी से उनके क्या रिलेशन या उनकी टीम को क्या रिलेशन है, उस पर क्लैरिफाई करना चाहिए उन्हें। और जो सवाल हैं अब लोगों के मन में, तो एटलीस्ट उन्हें क्लियर तो हो, ये पब्लिक भी जानना चाहती है और विपक्ष भी जानना चाहता है। तो एज ए प्रधानमंत्री उनका जो रोल है कि उन्हें प्ले करना चाहिए, आके डिफेंड करना चाहिए कि जो उनकी टीम पे सवाल उठाए जा रहे हैं वो सही नहीं है और उसे क्लियर करें। हाँ, मन की बात 2 मुद्दे पे होनी चाहिए। एक तो काला धन और दूसरा जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है ये मंत्रियों पर, तो वो मोदी जी को स्पष्ट मन की बात सुना देनी चाहिए। इस बार ये टॉपिक होना चाहिए कि अभी ललित मोदी के रिगार्डिंग जो भी हल्ला बोल मचा है, तो उसके रिगार्डिंग नरेंद्र मोदी को पूरा मन की बात बोल देनी चाहिए कि सुषमा स्वराज और वसुंधरा के लिए पूरा डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि एक्चुअल थिंग्स में क्या है। वो उनको इस बारे में स्पष्ट करना चाहिए, अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देनी चाहिए भी ये हो क्या रहा है। ये अगर इसमें कोई है धांधली है कोई, तो उसके बारे में स्पष्ट बोले। मैं ये चाहती हूँ मन की बात के जरिए जो प्रधानमंत्री हर बार जो भी मुद्दा उठता है उस पर अपना क्लैरिफिकेशन देते हैं, उस पर अपना कमेंट देते हैं। और इस बार उनकी पार्टी के अंदर जो भी बातें चल रही है, मैं ये चाहती हूँ कि वो इन सब चीज़ों का क्लैरिफिकेशन दे। Well, the Mann Ki Baat address isn't the only program on the Prime Minister's schedule today. It's a busy Sunday for Modi with trips to 2 states planned. A radio address laying the foundation stone of an agricultural institute and launching a trauma center and inaugurating a power project. That's the Prime Minister's day plan in a nutshell. The Prime Minister will visit the constituency that sent him to Lok Sabha. The Prime Minister will visit the Banaras Hindu University where he would inaugurate the newly built trauma center. Later in the day, the Prime Minister will launch the flagship integrated power development scheme which aims at strengthening sub-transmission and distribution network in the city. Now 574 crore rupees have been allocated for the scheme. He is also slated to address Vikas Sabha, which is a large number of people are expected to attend. In fact, the Prime Minister will also visit Jharkhand later, and the Prime Minister will lay the foundation stone of the Indian Agriculture Research Institute at Goria Karma village in Hazaribagh district. Union Agriculture Minister Radha Mohan Singh will also be present at that event.